Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I Gayatri Auti welcome you all to my YouTube channel and I am really very sorry because approx 1 month से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया लेकिन मैं आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल लेक्चर लेके आ रही हूँ. वो है GOC, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यस, यू आर राइट. Then the first very basic part is the GOC and GOC में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा crystal clear questions means concepts which is very important in perspective of NEET, that is NEET, then JEE and all that competitive exam as well as board exam as well as competitive exam. Okay. Without further delay, let's begin the session. Now, the first very basic concept is the priority order of the functional group. What is priority order of the functional group? What is the priority order of functional group? The first king is COOH. I will came in the short form, then we will understood what its short form means. Okay, let's begin. यहाँ तक clear? चल. The first is COOH, then SO3H, then COOR, COCl, CONH2, then CN, then C double bond H, C double bond C, then OH, NH2, C double bond C, then C triple bond C. ओके, यहाँ तक क्लियर यहाँ तक. अब हमने देखे ये शॉर्ट फॉर्म्स. अब हम लोग इसके फुल फॉर्म्स पे आते हैं. मीन्स वो शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पे आते हैं. द फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर दैन सल्फोनिक एसिड इज ग्रेटर दैन ईस्टर मीन्स COOR is greater than acyl chloride, then it is greater than amide, that is CONH2, and then cyanide, then ketone, then aldehyde, then ketone, then alcohol, NH2 means amine, then alkene, C double bond C is alkene, and C triple bond C is alkyne. The last is alkyne. Alkyne came in the last priority order, while the COOH has the higher importance in the priority order. What I said? COOH has higher number in the priority order. Okay. प्रायोरिटी किसको ज्यादा है? COOH को, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड को. नाउ यहाँ तक क्लियर. अब व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? बचपन से सुनते आ रहे. इंडक्टिव इफेक्ट इज केम फ्रॉम टू टाइप्स, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग स्टफ फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, आई थिंक सो. हम लोग ये भी कंप्लीट करने जा रहे हैं. द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. मुझे आपको एक बात बोलनी है, हमारे आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अगर आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करो, प्लीज़ इग्नोर करो. ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड है, लेकिन इग्नोर करो और यहाँ पे ध्यान दो. चलो, द सेकेंड इज इंडक्टिव इफेक्ट. देन व्हाट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट? Inductive effect, the first point is it is the permanent polarization of carbon chain. It is the permanent polarization of carbon chain. Yes ma'am, यहाँ तक clear. Second point, due to, क्यों होता है? Due to displacement of sigma electrons. क्यों होता है? Due to displacement of sigma electrons towards more electronic atom. Towards more electronic atom due to unequal sharing of bonding electron. Now the very basic important part is, फर्स्ट पॉइंट हमें
It is the permanent polarization of carbon chain. What I said? It is the permanent polarization of carbon chain. क्यों होता है? Displacement of sigma electrons towards more electronic atom. Okay? More electronic atom. अब ये क्यों होता है? Due to unequal sharing of bonding electron. ये क्यों होता है? Unequal sharing of bonding electron. जहाँ तक क्लियर? पक्का से क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. The main important part is inductive effect is inversely proportional to the distance. What I said? Inductive effect is inversely proportional to the distance. Okay, ma'am. Now, guys, this is very important. Inductive effect is of two types. So, what I said? Inductive effect is of two types. First is plus I, second is minus I. What I said, guys? Repeat it. First is plus I, second is minus I. Now, what is known as plus I effect? Let's do it. Plus I effect is also known as EDG. What is EDG? EDG means electronic donating group. EDG means electron donating group. Okay? अब EDG के बाद इसकी definition क्या है? Means atoms or groups which are electropositive. Atoms or group which are electropositive. Now the important part is electropositive है मतलब चार्ज निगेटिव है. मतलब चार्ज निगेटिव है. ओके? वो क्या कैरी कर रहा है? निगेटिव चार्ज. अब plus I effect is again inversely proportional to the acidic nature. Means directly proportional to the basic nature. Okay? Plus I effect is inversely proportional to the acidic nature. Yes, ma'am. Clear. Up. Minus I. What is minus I? Controversy, ma'am. It is opposite of plus I. Okay. Minus I effect is known as EWG. Means electron withdrawing group. What I said? Electron withdrawing group. Okay. Definition. Atoms or group which are electronegative. Which are electronegative. Also, electronegative means carry positive charge. Yes, you are done. Carry positive charge. Then, minus I effect is now directly proportional to the acidic nature, inversely proportional to the basic nature. What I said? Directly proportional to the acidic nature, inversely proportional to the basic nature. चलो आगे बढ़ते हैं. Now the two main concept is minus I order and plus I order. Very important. What I said? Minus I order, plus I order. We are saying that minus I order means electron withdrawing group. मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. अब हमने देखा था माइनस आई के डेफिनेशन में वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैरी कर रहा है गाइस निगेटिव चार्ज. यस, यू आर डन. कैरी कर रहा है, कैरी क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज. ओके, माइनस आई इफेक्ट. ओके, चल अब ऑर्डर देखो. NF3, NR3, NH3 प्लस 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 उनके ऊपर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज. NF3 plus, NR3 plus, NH3 plus. Then again NO2, C triple bond. Then C double bond OH, C double bond OR, C double bond OOH, F Cl Br I means fluorine, chlorine, bromine, iodine, halogens. Then OR, OH, C triple bond CH, C triple bond CH. NH2 is approximately equal to phenyl or the benzyl group. This is very important. Write it. Write it. NH2 is approximately equal to phenyl or the benzyl group. अब आगे CH double bond CH2 and lastly is hydrogen atom. Lastly is
हाइड्रोजन एटम. यू आर राइट. देन अब प्लस आई ऑर्डर पे आते हैं. We are saying that plus I is electron donating group. You are right. Plus I is electropositive, means carry negative charge. Okay, you are done. Then come to the order. The first is CH2 NH2O minus. Minus 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 means it carries negative charge. Obviously, plus I order carries negative charge. Up CH2 minus NH2 minus O minus COO minus CCH3 taken thrice means 3 degree means tertiary alkyl group. Write it. Very important. Means tertiary alkyl group. HCCH3 taken twice. Obviously 2 degree means secondary alkyl group. Now the last one is CH2CH3. What it means, ma'am? 1 degree primary alkyl group. Primary alkyl group. और लास्ट में आएगा CH3 बेचारा मिथाइल. बेचारा मिथाइल. ओके, लिख लिया. यू आर डन विद दिस. प्लस आई ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर. ओके, डन. चलो ये सेशन यहाँ पे ही एंड करते हैं. ये इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आई थी. अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विच इज आल्सो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे फॉरएवर विथ मी and always like, share and subscribe to my YouTube channel and do follow my Instagram profile. Okay, bye bye guys. And lastly, if you have any doubt, please ask me in the comment section, and if you want to take the lessons of organic chemistry, then write it in the comment section. Bye bye guys.